अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। हम आ गए, हम दोनों, और साथ में एक खास मेहमान लाए हैं। इनका सफर शुरू हुआ था PTV पे एंड आके खत्म हुआ है फिलहाल, नॉट लिटरली दी एंड, on TV1 Canada. He is hosting our newest local production called Studio One, and मुझे उनसे ये शिकायत है कि my dad actually likes his show more than he likes our show. So without further ado, I'm going to be introducing you to a man who wears many hats, but he probably rocks each and every piece of headgear that he wears. I'm talking about none other than Arshad Mahamoood. Arshad, assalamu alaikum. Welcome to Must1, हमारे शो में. Assalamu alaikum. It's really a pleasure to have you here today. ज़्यादा मत करो. And thank you for inviting me. वो competition है हमारे. ये ऐसे आपसे बहुत intimidate हुआ हुआ है, आप इसकी फिक्र ना करें. वो my father says every time I go home I always have to hear कि ये क्या ऊट पटांग हरकतें कर रहे हो टीवी पे. Studio One देखो कितनी sober सी presenting करते हैं. And I was like, Studio One जैसा show है तो what are you gonna go on like Studio One? It's not gonna work. तुम्हारे अब्बा ने मुझे नहीं लगता कि ये कहा हो कि कितनी सोबर सी प्रेजेंटेशन, उन्होंने ये कहा होगा कितनी सीरियस प्रेजेंटेशन है. Sober serious. In comparison, we're like drunk presenting. Seriously, I think there's a lot of people who are really fond of the level of sophistication and knowledge you bring to your show. So, पहला सवाल मैं आपसे ये करूँगा कि just like I said, you know, he wears many hats. You've traveled the gamut from being a PTV presenter to then going to being a banker, and then sort of coming back to Studio One to be a presenter. Which came first? ये chicken or egg जैसा सवाल है, but which came first? TV1 से पहले PTV की बात जो तुमने की, तो PTV से पहले भी मैं बैंकर था. Okay. PTV was basically a hobby and a passion. PTV was never a profession. But it was a very interesting and a very learning experience for me. उस ज़माने में जब PTV 243 कंट्रीज़ में लाइव वाया सेटेलाइट जाया करता था, तो मेरी फेवरेट तरीन लाइन सुबह के वक्त ये होती थी कि आपके बेडरूम में आपके जागते वक्त आप मुझे पाएंगे. And every morning for 2 hours I would obviously be there. Right. So that was a very interesting experience. So banking came first. They were all simultaneous. Yeah. So you were obviously in banking. So what is it about presenting जिसने आपको अपनी तरफ attract किया? देखो, एक तो there's no business like show business. That's true. तो उससे ज़्यादा तो बड़ी अट्रैक्शन कोई और हो नहीं सकती. लेकिन मुझे अट्रैक्ट करने की बजाय मेरा लतीफ़ा वो वाला है कि जो एक शख्स खड़ा हुआ था, तो एक बच्चा पानी में डूब रहा था, तो उसने छलांग लगा दी, पीछे जाकर उसने निकाल लिया उसको पानी में से. लोगों ने उससे पूछा कि भाई आपने बड़ी हिम्मत की, आपने जाके उसको पानी में से निकाला. उसने कहा यार हिम्मत को छोड़ो, मुझे ये बताओ मुझे धक्का किसने दिया था. तो मेरे साथ टीवी पे वही हुआ कि मुझे मेरी बेगम ने धक्का दिया. ये आज से 20-25 साल 22 साल पुरानी बात है कि she was offered to anchor the morning transmission at PTV in Pakistan, and that was I think in 1992. Right. And she volunteered me कि भाई आप जाइए और जाके ऑडिशन दे दीजिए. मैंने ऑडिशन दे दिया और लो एंड बिहोल्ड नेक्स्ट मॉर्निंग कॉल आ गई प्रोड्यूसर की कि जी आप आ जाइए और आके टेलीविजन पे शो शुरू कर दिया. So it is true कि behind every successful man there's a woman. धक्का दे रही भी. And behind every man like myself also there is a successful woman. अच्छा, ये जो आपका शो है Studio One, right? I've seen it. It's actually a very intellectual show. क्या कहते हैं इसको? इसका आइडिया क्या है? Like what is it that you're trying to tell the Pakistani community? हम लोग उसमें से क्या expect करें? Basically दो चीज़ें हैं महा इसमें. एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि कैनेडियन पर्सपेक्टिव में पाकिस्तानी डायस्पोरा जो यहाँ पे रह रहा है, उनकी जो मसाइल हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं, उनके जो सब्जेक्ट्स हैं जो उनको इंटरेस्ट करते हैं, जो उनसे रिलेट करते हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं. पहली चीज़, इसमें बहुत से सब्जेक्ट्स, बहुत से इशू, बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं which become a taboo normally for people, and they do not want to talk. They want to talk about it, they do not have the nerve to talk about it, but they want to see somebody talking about it. Yeah. Right. तो we are that somebody जो कि आवाज़ दे रहा है उन लोगों को, जो कि उनको तस्वीर दे रहा है कि आप आइए, यहाँ बैठिए, बात कीजिए, हम आपकी बात सुनेंगे और लोगों तक पहुँचाएंगे. That's what Studio One is doing. We are a contemporary, cutting-edge program that basically reflects the point of view of certain people, and our message to people is, आप बेशक हमसे agree करें ना करें, you love us or you hate us, listen to us. It's a different point of view. Try to understand people have different points. So basically you're trying to get everyone's opinions being heard on TV, right? You said it right. So अक्सर आपके जो शो में होता है, you often show के दो पहलू जो होते हैं कहानी के, there's usually two people representing two very polar opinions. Is it difficult being at the center of such diametrically opposed people? It actually is. It actually is very difficult to be in the center, but it's even more difficult to remain in the center.
Yes. क्योंकि इंसानी फितरत ये होती है, नेचर ये होती है कि आप किसी ना किसी तरफ इंक्लाइन करते हैं। मगर हमारी जो प्रिंसिपल है वो ये है कि टेलीविजन वन का, टीवी वन का अपना कोई ओपिनियन नहीं है। Right. स्टूडियो वन इज अ माइक्रोफोन एंड स्टूडियो वन इज अ कैमरा, एंड माई जॉब इज टू मेक श्योर that we remain a microphone and we remain a camera and we let people talk and say what they have. That was actually Basically, your just next- that was actually you your just next question that- answered my next question. I mean, so you don't really let much of your decision or much of what you think into the conversation, do you? It stays there throughout the show. So you My have to be opinion- neutral. No, my opinion and my views stay there. Okay. जो कमाल होता है वो ये होता है कि आप अपने ओपिनियन और अपने व्यूज को किस तरीके से बात करते हैं कि जिसमें लोग उसको ऑफेंसिव ना समझे और उससे इंस्पिरेशन लेके ओपन एंडेड क्वेश्चन के जरिए कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करें। Right. दैट्स द होल ट्रिक। Are you always this serious, or is this part of the Studio One persona? मैं तुम लोगों की मौजूदगी में सीरियस हूँ इसलिए कि मुझे एक आप ये समझ लो कि मस्त वन और स्टूडियो वन, सो मस्त से लेके स्टूडियो तक का जो सफर है उसमें वो सीरियसनेस आ जाती है। Okay, so there are times when you were like us as well. There are most of the times I am like you. Okay, That's good to know. So tell me about मतलब आप लोग भी मेरे लिए एक एग्जाम्पल हो फॉलो करने के लिए। Suna, papa, suna. Okay, so tell me about Mosaic. How did that start off? Mosaic started off about 7 years ago, basically, when we moved to Canada. That was about 10 years ago, and we lived in Mississauga. I have twin daughters who are now 22, but who are 12 when we moved to Canada. तो वो लोग ज़रा पहले आ गए थे, मैं बिजनेस वगैरह क्लोज कर रहा था, सब कुछ उसके बाद आया। तो जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो वन ऑफ माई डॉटर्स वंस, हम लोग बैठे हुए बात कर रहे थे तो कहने लगी कि आप मिसिसागा की डेफिनेशन देखें क्या है। सो वी गूगल्ड इट और याहू इट और वट एवर इट वाज, जीस और वट एवर जो सर्च इंजन होते थे, वो हमने किया तो पता चला कि जी मिसिसागा की डेफिनेशन है ए लार्ज सबर्ब क्लोज टू द सिटी ऑफ टोरंटो। तो जो डेफिनेशन मिसिसागा की थी वो थी सबर्ब है। तो कहने लगी कि ये एक सबर्ब है जहाँ पे लोग सिर्फ सोने के लिए आते हैं, ये टोरंटो का बेडरूम है, यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है। तो वहाँ पे हमने कहा यार कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए, और उसमें चूंकि साउथ एशियन हम खुद हैं, सो इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ एशियन कल्चर, बट इट इज़ अ विंडो from which South Asians look outwards. Right. So everybody can learn and educate themselves about the South Asian culture in a very educated way, professional environment, presentation. That's what Mosaic is. So I mean, so many years down the line, Mosaic एक काफी अहम हिस्सा बन चुका है, part of Mississauga's culture. काफी sort of you know खास शख्सियत आई है, मतलब as part of Mosaic. You've had Josh, you've had RDB. What's in line for Mosaic 2011? 2011 मैं आपको अभी बता के सरप्राइज खत्म नहीं करूंगा, but just to tell you कि it will be equally interesting and attractive for 2011 as it has been in the past. But जो तुमने मुझे पूछा अभी कि ऐसी शख्सियत आई हैं अब तक, RDB था, जोश था, which is a Canadian talent. हमने जो कोशिश की है और जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं करना, वो ये है कि देयर आर अदर सिमिलर इवेंट्स आल्सो हैपनिंग विद इन द टाउन, इन द कंट्री. द डिफरेंस इज कि बाकी सब लोग जब कर रहे थे ना, तो वो एक साउथ एशियन नॉवेल्टी को प्रेजेंट कर रहे थे. अब नॉवेल्टी का क्या होता है कि नॉवेल्टी वेयर्स ऑफ इन अ लिटिल टाइम. थोड़ी दिनों में आप यूज्ड टू हो जाते हैं. कैरासागा हो रहा है, कैराब्राम हो रहा है ब्रैम्पटन में, इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स हैं. नॉवेल्टी उन सब की वेयर ऑफ हो चुकी है. क्वालिटी प्रोडक्शन की थी नहीं, तो जब वो चीज़ें नहीं हो रही थी तो ऑटोमेटिकली लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है उन चीज़ों के. हम कोशिश ये करेंगे, और जस्ट बिटवीन यू एंड मी, पाकिस्तानी ही एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है जिसने हिंट हिंट बॉलीवुड के गाने भी गाए. राहत फतेह अली खान. मैं नाम नहीं बोल रहा, मैं नाम नहीं ले रहा, मुझे नहीं पता, मैंने कोई नाम नहीं लिया. हम उनमें से किसी एक आर्टिस्ट को बुलाना चाह रहे हैं for 2011. I'm sure it'll be really good. So we've got 1 minute to go, and okay, that gives us exactly 1 minute to get through the rapid fire round. Okay. Oh my So the God. point of rapid. Now you're scaring me. Now we're going to grill you because I guess again we have to be must-1. Okay. हम भी कुछ हैं. Exactly. So एक बात मैं छोटी सी कह दूं, मस्त वन की बजाय प्रोग्राम का नाम बदलो, इसका नाम रखो मस्त 2.
वो मस्त मैं हूँ और ये वन है. अच्छा ये वन है. ये वन है. Yeah, कुछ ऐसा ही समझ में. She's like, she's so sweet. Acha, anyway, so we're going to start the rapid fire round. Okay, we're going to go one by one question. So question number 1. Must1 or Studio One the better show? Obviously Must1. I'm sitting in Must1. Okay, banking or presenting? Presenting, come on. Mahar Wasim, your preferred interviewer. दोनों बारी बारी मुझसे ये पूछो और एक बंदा अपने कान बंद करे. ये कान बंद करेगा. He's just gonna say both our names. Okay. She's on one with Sahil Lodi or she's on one with Faisal Qureshi? She's on one with Arshad Mahamoood. Ah, nice. PTV or TV1 Canada? TV1 Canada, TV1 Canada, TV1 Canada. Oof. Nawaz Sharif, Pervez Musharraf or Asif Zardari, the better leader? Better leader. If you're asking me to select the lesser of the evil, I can. If you're asking me to select the better of the lot, I cannot. Okay, so the next question is Nawaz Sharif, Pervez Musharraf or Asif Zardari, the bigger threat? The bigger threat. All of them. Okay, if you had to cast one political icon in the following shows, who would it be? Band Khidkiyon Ke Piche? Or? Go for it. If you had to cast one political icon in one of these TV shows, who would it be? Band Khidkiyon Ke Piche. बंद खिड़कियों के पीछे में तो मोस्ट प्रॉब्ली मुझे नवाज शरीफ को लाना चाहिए. रंगीन मिजाज आंटियों के साथ उन कंपनी देंगे. There you go. Dexter, it's about the serial killer. Dexter, about the serial killer. You do not want me to name the president of Pakistan, do you? we got our answer. Okay. Little Mosque on the Prairie. Oh my God. Little Mosque on the Prairie. Give me a hint. Who would you like to see there? Well, then that would be my interview, right? When we come to your show, you can ask us. Does This it is have to be a us. political... No, it can be any sort of icon. Let's go for that. So Little Mosque on the Prairie. I would actually try and bring a Maulvi from a masjid in Pakistan. That would be- Especially one of those in the village mosques. Yes. And put him there. Lovely. And I think the final question was the good wife. Mine. Oh, That was a smart answer. And I think you've got the final question, which is, if not banking or anchoring, what would Arshad Mahamoood be doing? And I think we just asked you that question anyway. So you did pretty well. I'm impressed. Do I get 10 out of 10 or? I think you do. I think you answer questions just as well as you You ask will them. not stop your dad watching my program? I don't think so. I Excellent. couldn't. And we're okay. You promise that? I promise. I think हम दूसरे लोग भी I देखेंगे. don't want to steal your show. Honestly, trust me in that. So there you go. The fabulous, fantastic life of the man behind the sophistication, behind the knowledge, and behind the demurity. It was Arshad Mahamoood. I think आप आए, we get singers ऐसे आप आए हमारे स्टूडियो में स्टूर आ गया. आप आए हमारे स्टूडियो में थोड़ी maturity आ गई. Exactly. So it was in a good way, not necessarily in age numbers. So. Are you trying to say something to him? No, look at It you. was a pleasure having you here, though, really. It was a pleasure being there. Thank you very much for inviting. You guys are doing an amazing and wonderful job. Thank you. And if I am bringing the maturity or the seniority to the show, you guys are bringing the youth and the liveliness to the show, and we need it. Believe me, we in Canada need that. So Thank you very keep much. up the great Thank work. you so So much. as a rounding note, can you just tell everyone about Studio One, the times and when they can catch it? Studio One, you can watch with me every Wednesday on 7 p.m. and every Sunday at 12 noon. Every Sunday at 12 noon is actually the new episode, and every Wednesday at 7 p.m. is the replay. So watch Studio One with Arshad Mahamoood, And there you go. I mean, it's definitely a good show. I think all mazak aside, it's definitely something you might want to watch. Agar aapko thodi si bhi serious baat pasand ho, if you prefer current affairs, if you prefer different opinions, Studio One is the show you need to tune into. I know we tune into it at home more than we tune into Must1 actually. So. All right, guys. So we are running out of time, so we have to take a break here, and we'll catch you then later.